So let us continue. So these are the minimum limitation of the steps for the beam. So we will go towards the SAF, and again we will check. You can also check on this. This is the longitudinal bars. You can click on the transverse and apply. Now it is showing you the shear reinforcement required for the beams, right? And in some beams it is showing 0 because there is no shear and it is incorporated by the other beams, right? So now if I move cursor over this beam, so it is showing me it is 0.12 inch square per foot, right? It is 0.12 inch square per foot. This is the reinforcement required for the beam, right? And I think this is the minimum governing. If I right click on this, just like we have seen the longitudinal reinforcement, so this is the shear reinforcement, this is the shear diagram, and the shear reinforcement is continuous throughout the beam, and it is 0.12, 0.12, 0.12, and it is giving you the this reinforcement in the unit of inch square per foot, right? So let us change this with the feet, and we will be dividing this 0.12 by 12 to change it into inch square per inch, and it is 0.01, right? And let us go to the ETAB, the PowerPoint. So the results for the shear is equal to 0.101 inch square per inch, right? I've converted this 0.12 into inch square because we have previously calculated this in inch square per inch. So this is the required reinforcement for the this beam, and it is, if you can see, this is the minimum reinforcement which we have calculated, but the governing is this one. So you have to provide at least this much reinforcement for the beam, and again it is comes out to be, if I use number 3 bars and divide it with 0.01, it will give me 11 inches. So this reinforcement is governing. So finally we will use number 3 bar at the rate 8 inches center to center, right? So this is the design for the shear of the beam, strap beam. The next is the same procedure for the design of a straight footing, which we performed previously, and it will give you the same results, but theoretically speaking, it should give you less reinforcement, because some of the reinforcement is taken by the beam, but it is not 100% true or correct that it will give you. For example, in previous we used number 6 bar, and you will be thinking that this time I will be getting number 4 bar, because on that case the thickness of the footing was 18 inches, but here it is 12 inches. So by increasing the depth of the footing, it will give you less reinforcement. And by decreasing the thickness of the footing, it will give you more reinforcement. So the more reinforcement that should have given by the safe is incorporated by the uh, beam, strap beam, right? So let us check it. And let us check whether it will work with number 6 bar or not, which we have provided. Right, so again the pattern is the same. So if I click on this 6, so this is the top reinforcement. So now you can see still it is working just like we did in 18 inches thick footing, right? So sometimes it will give you relief, but sometimes it will give you more reinforcement in the footing because of the decrease in the thickness of the footing, right? So overall the procedure for the Australia footing is the same which we did previously. So this was the whole story about the design of strap footing and the design of the strap beam as per ACI code. So is there any questions you can ask?
So I think some of the students may not be clear about this pattern of the longitudinal reinforcement for at the support or at the mid throughout and throughout. So let me draw a sketch. For example, let me make it in here, right? So if I draw a beam, for example, this is the typical beam which we provide to the client. This is the So these are the longitudinal reinforcement, top reinforcement. So this is, for example, longitudinal bars. These are coming. So it will show you a cut in here, and some of the bars will go continuous. Right. So there will be a cut, and this is the bottom reinforcement. This is the continuous one, and the extra required will be provided or above this, not like this, because it will be in the same layer. So it will be shown in the same layer, but there will be a cut shown just like in the top reinforcement. So there will be a cut and there will be the cut, right? So if you take a section in here, so this is the mid of the beam. So the section will be like this. So at the top, there will be 4 reinforcement, right? Because you have cut the remaining 4, and at the bottom, there will be 2 bars. So this is the section in here. This is section AA. This is section A. And if I take section over here, this is the support. And at the support, let us call it section BB. So if I draw the section over here, so at this support, we said that there will be 8 bars. So there will be at the top, there will be 8 bars. And there will be 2 bars at the support, because there will be 4 bars at the mid. So here it is 4. So this is 4 bars. So at the mid of the beam, so the bending moment, positive bending moment is more, and the negative bending moment is more at the support. So at the support, the 8 bars will be provided, 8 number 4 bars, and at the support bottom reinforcement will be 2. But at the mid of the beam, 4 bars will be continuous at the top, and the 2 bars will be continuous, and this 2 will be extra, so it will become 4 bars. So this is what I meant, and I've written that in the presentation. I think this is clear now. So if there is any questions, you can ask. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? सर ये अक्सर देखा जाता है कि ये खासकर ये जो बार बेंडिंग वाले होते हैं वो कहते हैं कि फुटिंग में टॉप रेनफोर्समेंट की लोकेशन पे वो कहते हैं कि ये टॉप पे है और मेन स्टील बॉटम पे. जरा थोड़ा बता दें कि डिटेलिंग में टॉप स्टील कहाँ पे होगा, स्ट्रिप में या स्ट्रैप फुटिंग में? कहाँ पे होगा मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं. बीम की बात करें कि फुटिंग की बात करें? फुटिंग की सर. फुटिंग में टॉप रेनफोर्समेंट कहाँ पे होगी ये कह रहे हैं आप? मेन रेनफोर्समेंट सर. मेन रेनफोर्समेंट नीचे होगी कि बॉटम रेनफोर्समेंट में मेन रेनफोर्समेंट कहाँ पे होगी? जी जी बिल्कुल सर. देखिए आइसोलेटेड फुटिंग में तो आपके पास दोनों डायरेक्शन मेन डायरेक्शन है, तो उसमें अगर आप कौन सी डायरेक्शन में ऊपर नीचे हो तो कोई मसला नहीं. लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वन वे स्लैब हो या वन वे फुटिंग, फॉर एग्जांपल दिस इज वन वे फुटिंग, राइट, तो आपके पास जो मेन डायरेक्शन है वो दिस इज शॉर्ट डायरेक्शन. तो अगर आप इस यहाँ पे सेक्शन ले ले इसका, तो इसमें जो शॉर्ट डायरेक्शन है दीज आर द मेन बार्स, तो ये आपके पास नीचे होने चाहिए. अगर मैं इसका सेक्शन आपके पास बना लूँ तो इसका
जो ये बार्स है, दी शॉर्ट बार्स, दीज आर द मेन बार्स, ये आपके पास नीचे होने चाहिए, और उसके ऊपर जो बार्स आएंगे लॉन्गिट्यूडनल बार्स, वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है जी। लेकिन अगर पास आइसोलेटेड फुटिंग है तो आपके पास इसमें दोनों डायरेक्शन आपके पास मेन डायरेक्शन है, लेकिन अगर आप इसमें ये डायरेक्शन टॉप पे हो या ये डायरेक्शन टॉप पे हो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट सर। देखिए आपके पास जिस डायरेक्शन में बेंडिंग और डिफ्लेक्शन होती है ना, तो उस डायरेक्शन में आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बीम शो कर दूं, तो ये आपके पास एक बीम है, राइट। सो ये आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और आपके पास इसकी बेंडिंग मोमेंट किस तरह होती है, इसकी डिफ्लेक्शन जो आपके पास होती है, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप आपके पास ये होती है, लेकिन उसकी बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो आपके पास इस तरह पॉजिटिव होती है, राइट, इस तरह। तो जिस डायरेक्शन में आपके पास बेंडिंग होती है उसी डायरेक्शन में आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो आप इस डायरेक्शन में बार्स प्रोवाइड करते हैं टू कंट्रोल दिस डिफ्लेक्शन और बेंडिंग मोमेंट। इस तरह इसी केस में आपके पास होती है, इसकी बेंडिंग आपके पास इस डायरेक्शन में होती है फुटिंग की, तो इस फुट बेंडिंग मोमेंट को और इस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप बार इस डायरेक्शन में देंगे। सो दीज आर द मेन बार्स विच इज इन द शॉर्ट डायरेक्शन। लेकिन आइसोलेटेड फुटिंग में आपके पास जो बेंडिंग होती है वो इस डायरेक्शन में भी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आइसोलेटेड फुटिंग है, तो इस डायरेक्शन में भी आपके पास जो बेंडिंग होगी और इस डायरेक्शन में बेंडिंग होगी, दीज आर द सेम, दोनों इक्वल होंगे। तो अगर आप बार इस तरह भी प्रोवाइड करेंगे और इस तरह भी प्रोवाइड करेंगे, अगर ये टॉप पे हो या ये टॉप पे हो तो सेम ही बात है। सर एक दफा सॉइल प्रेशर चेक का भी बता दें। किस चीज का? जो सॉइल प्रेशर चेक करने का होता है ना जी जी, सर, वो बता दें, एक दफा मुझे समझ में नहीं आया। वो आप जो सेशन 3 की बात करें उसमें? जी देखिए वो तो आपने जो एरिया फाइंड किया है फॉर द फुटिंग, वो आपने अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी से ही फाइंड किया है। ये दिया आपके पास अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी आपके पास 4.63 था। इसी नहीं allowable bearing- सर, जो सेफ से आप चेक करते हैं वो। अच्छा, सेफ में देखिए, जी नॉर्मली सेफ में आपके पास जो सॉइल प्रेशर्स होते हैं वो आपके पास नॉन लीनियर तरफ चला जाता है, और आपके पास वो आपको काफी ज्यादा प्रेशर बताया था। आप सोच रहे कि मेरा जो स्ट्रक्चर है, वो फाउंडेशन है, वो फेल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली आप उसको मैनुअली चेक करेंगे प्रेशर को। तो ये आपके पास जो प्रेशर है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता, आप जाएंगे डिस्प्ले, और यहाँ पे आप शो रिएक्शन फोर्सेस, और यहाँ पे आप जो कम्बो सेलेक्ट करेंगे, दैट विल बी सर्विस कम्बो, and you have to click on this soil pressure, and you have to click on apply. So now this is the soil pressure in which you can see the uplifting, if there is any uplifting, and you can see that the maximum pressure, soil pressure is 1874, and it is minus 5862, but you have to see by the cursor, moving the cursor, and it is the 4581, and it is 4199, and it is, you can see that the allowable is the, with the manual calculation, it is 4.6, it means 4630, right? So this should be less than this. If it is greater than this, then you might think that the pressure is very high and my foundation will fail, but this is not the case, because sometimes it goes to the nonlinear analysis. Because if I go to the design combination, and if I click on one of the load combination, now it is showing me the load combo combinedly, and it is, you can see that there is ln means non-linear, because the safe will perform the non-linear analysis for you, but you do not want to perform the non-linear, you want linear analysis, because your assumptions, your theory, design theory,
all are based on the linear elastic theories, right? So this is the non-linear analysis. But if you check the soil pressure on the basis of non-linear, it should always be greater than the allowable bearing pressure. So I will recommend you not to check this on the safe. You have to check it manually and calculate it with the compare with the demand. Now you can see that the maximum pressure in here is 4453, which is less than 4630, but in here it is greater than 4630 because of the non-linearity of the analysis, right? So this is the main reason that we normally do not check the soil pressure in safe, because it performs the non-linear analysis for you. But for our design and our analysis and our assumptions is on the linear elastic analysis. सर अगर लीनियर में ही मैं जब डिजाइन कर रही थी वो 2 फुटिंग आपस में ओवरलैप कर रही थी, तो सर इसका क्या रीजन है? अगर फॉर एग्जांपल ये 2 फुटिंग आपके पास ओवरलैपिंग करे तो आप इसको कंबाइन कर ले, सो इट विल बिकम कंबाइंड फुटिंग। जब सॉइल प्रेशर चेक करूं और ये ओवरलैप कर रहे हैं तो मैं उनको कंबाइन कर दूं? हाँ बिल्कुल, आप फॉर एग्जांपल फील्ड में तो ओवरलैपिंग तो नहीं होगी, फील्ड में तो अगर आपके पास यहाँ पे इन दोनों के दरमियान फासला 6 इंच है या 1 फीट है, तो इन दोनों को कंबाइन करके इनकी रिइंफोर्समेंट कंबाइन डाली जाती है। तो आप इसको मॉडल भी कंबाइन कर लिया करें। ओके राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉइल प्रेशर यहाँ पे दिखा रहे, तो नॉर्मली आपके पास ये रेंज में आ रही है, लेकिन कुछ आपको ज्यादा शो करे। दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियर एनालिसिस ऑफ द सेफ। Sir, I have a question. जी, And yes, and what about the development length of the reinforcement into the footing? Do we have to check it also, or we just extend it until the end of another side of the footing? sorry dear, your voice is not clear. Oh, hello. Is my voice clear now? Now it is clear. Oh yes. I have a question about the development length of the reinforcement. When we extend it into the footing, we have to check it also, or we just extend it until the edge of another side of the footing? There is a disturbance in your voice. I'm not clearly understanding your question. What are you saying? If you please write that question in the chat box. Oh, okay, okay. सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, नॉर्मली तो हम जो कंस्ट्रक्ट इस स्टेप फुटिंग में सर, आइसोलेटेड फुटिंग स्टेप फुटिंग जो होता है उसके ऊपर सर ये प्लेन बीम भी दिया जाता है सर, इसको थोड़ा क्लियर करें, थोड़ा डाउट है इसमें किस तरह। आप कह रहे हैं कि प्लेन बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये कह रहे हैं आप? जी जी सर, मत इन्हें नीचे ये स्टेप बीम दिया जाता है जिस हमने डिजाइन किया, फिर ऊपर हम प्लेन भी बीम यहाँ पे देंगे, यानी इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपके पास फिलिंग नहीं है तो आप प्लेन बीम की जरूरत नहीं है आप उसको देने की, लेकिन आपके पास अगर फिलिंग है, नॉर्मली जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि उसमें जो वॉल फुटिंग है वो प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कमरा है, राइट, और यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे कॉलम है और यहाँ ईच कॉलम यहाँ पे कॉलम है, तो आप इन सब के लिए आइसोलेटेड फुटिंग आप डिजाइन कर लेते, लेकिन आपको इस जो आपके पास वॉल है उसको अपनी ज़मीन पे रेस्ट करना है, उसके लिए आपने फुटिंग वगैरह करनी है, तो उस फुटिंग से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि आपको कह रहे हैं कि इसको यहाँ पे प्लेन बीम दे दे, तो हम जो हमारे जो वॉल है वो हम प्लेन बीम से स्टार्ट कर लेंगे, तो हमें जो वॉल फुटिंग है उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक रीज़न आपके पास ये। दूसरा रीज़न आपके पास ये, अगर आपके पास फिलिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास फुटिंग है, राइट, और आपके पास आप यहाँ पे तकरीबन ये NSL है,
और NSL से आप यहाँ 5 फीट है, तो 5 फीट आप फिलिंग करेंगे, तो फिलिंग के लिए आपके पास ये अनस्टेबल बन जाता है, तो उसके लिए आप प्लेन बीम प्रोवाइड करते हैं ताकि ये इसको स्टिफ कर दे और फिर आप यहाँ पे बीच में आप फिलिंग कर सकते हैं, तो दिस सिस्टम विल बी स्टिफ। तो ये दो रीजंस होते हैं जिसके लिए प्लेन बीम प्रोवाइड किया जाता है। ओके सर, थैंक यू। या अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन शो कर लूँ, तो नॉर्मली आपके पास ये एक फुटिंग होगा, राइट, और यहाँ पे ये इस तरह प्लेन बीम जा रहा होगा, यहाँ पे दूसरा फुटिंग होगा, इसके साथ ये कनेक्टेड है, और इसके ऊपर यहाँ से वो वॉल शुरू कर देते हैं। यहाँ नीचे कुछ फुटिंग वगैरह है, बस यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं और फुटिंग इस प्लेन बीम से जो वॉल की ब्रिक वॉल है वो इस प्लेन बीम से उठा लेते हैं, ये आपके पास वॉल हो जाती है, और यहाँ पे ये फिल कर देते हैं, तो यहाँ पे वॉल की फुटिंग देने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे जितने भी ब्रिक्स है वो बच जाती है, और यहाँ पे इसकी कॉस्ट नहीं होती इसकी, तो इकोनोमाइज करने के लिए प्लेन बीम दिया जाता है। ओके सर। So I have a question about the development length of the rebar into the footing. Do we only extend into another side of the footing? Thank you. Right, you have to satisfy all of the requirements of development length of the rebars. For example, I'm still not getting your question very clearly, but for example, this is the one footing and this is the other footing, right? So if you, I'm just making it, if I'm taking your question right or not, that you have to fulfill the development requirement over here, you have to provide hooks, right? So if the hook is not possible, for example, the thickness is 12 inches and you cannot provide the hook, or with some reason the development length is not fulfilling, then obviously you have to combine the footing to fulfill the development length requirement. So when it is straight bar, so there will be no development requirement in here, but it becomes to the edge, you have to provide a 90-degree hook, or it will be 180-degree hook requirement, right? So in general, you have to fulfill all the development length requirements as per ACA code. I hope this question is clear. Yes, it's clear. Thank you. Right. जी, किसी का क्वेश्चन है? सर ये जो हमने बेचलर में पढ़ा है सिंगल रेनफोर्स बीम और डबल रेनफोर्स बीम, डबल नॉर्मली तो डबल रेनफोर्समेंट बीम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सिंगल का रेनफोर्समेंट का तो पता नहीं कि मतलब ये कहाँ पे यूज होता है। सिंगली रेनफोर्स्ड, जी सर। देखिए, आप सिंगली रेनफोर्समेंट, आप जो आपके पास बीम की कैपेसिटी होती है वो आप कंपेयर करेंगे डिमांड के साथ, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास जो बीम की कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 किप फीट है और आपके पास जो डिमांड आ रहा है वो आपके पास 200 किप फीट है, तो इट मींस कि द कैपेसिटी इज लेस देन द डिमांड, तो आप उस केस में आप डबल रेनफोर्स की तरफ जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जो आपके पास जो बीम डिजाइन होती है, डिजाइन प्रैक्टिसेस में आपके पास डबल ही होते हैं, सिंगल आपके पास बहुत कम होता है। सिंगल आपके पास नॉर्मली प्लेन बीम आपके पास होती है, जो लेंटल बीम्स होते हैं, और आपके पास जो विंडोज की ऊपर जो बेंड बीम्स होते हैं उसमें आपके पास सिंगली रेनफोर्स्ड बीम यूज होते हैं। नॉर्मली आपके पास जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स होती है उसमें डबली रेनफोर्स्ड बीम ही सॉफ्टवेयर आपके लिए डिजाइन कर लेता है। ओके सर, थैंक यू। नॉर्मली सर अक्सर हमने देखा है जो लेंटल बीम नहीं होते सर, जो खिड़कियों के ऊपर होता है, अक्सर जो कंस्ट्रक्शन लोग होते हैं नीचे जो मतलब जो मेन बार होते हैं वो रखते हैं, ऊपर नहीं रखते, वो स्टेप भी नहीं देते हैं। तो वैसे सर ये तो प्रॉपर डिजाइन का लोग तो अपनी तरफ से बाज़ औक़ात करते हैं, लेकिन इस देखिए, तरह फील्ड में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। नॉर्मली आपके पास अगर आप कोड देख ले तो एसीए कोड में जो बीम कॉलम जंक्शन है, कनेक्शन है, उसकी अपनी डिटेलिंग है, अपनी डिजाइन है, लेकिन नॉर्मली वो लोग उस जो पॉइंट है जो बीम कॉलम कनेक्शन, उसमें जो टाइज होती है, स्ट्रेप्स होती है, वो प्रोवाइड ही नहीं करती।
तो फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है, तो उसको ओवरकम करने के लिए इसी वजह से हम, अगर हमारे पास जो बार्स आ रहे बीम्स कॉलम में 4 आ रहे हैं, तो हम सेफ साइड को पे होने के लिए हम 8 बार्स देते हैं, क्योंकि आपके पास आपने डिज़ाइन FC प्राइम 3000 के लिए किया होता है, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं तो आपके पास 1000 PSI भी अचीव नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को आप साइड में रखेंगे और उसको एज पर दी डिज़ाइन प्रैक्टिस को आप डिज़ाइन करेंगे। Okay, sir. Thank you. Right, so I think this is enough. This is the end of this session 4. And still, if you have any questions, you can ask me tomorrow in tomorrow's session. I will question each and every question of you, right? So I will share this lecture and this file with you, and the video will be uploaded later on. And see you tomorrow, inshallah.